एक ऐसा रंगमंच है जो एक हम मतलब काफी स्पीकर्स ला रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, who will come and speak on ideas जो मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोशल और पॉलिटिकल एक्शन के लिए। रेक्स के जो 3 पिलर हैं वो राइट एवरी रॉन्ग एक्शंस है, एम्पावरिंग एंड एंटरटेनिंग आइडियाज, चाहे वो थिएटर के आइडियाज हो, चाहे ऑनलाइन आइडियाज हो, चाहे मीडिया आइडियाज हो, और सोशल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर मतलब सोशल इनोवेशंस के लिए जो भी मतलब कुछ काम करते हैं उनके बारे में। इसमें करीबन हम 40 से ज़्यादा स्पीकर्स करेंगे जो 25, 26 और 27 नवंबर 2012 को है। ये जीसस मैरी कॉलेज में होगा। और ऐसे जो कुछ स्पीकर्स जो है हमारे और को फाउंडर्स जो है वो हमारे साथ आज हैं। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर मार्को करानो टू प्लीज कम ऑन स्टेज। मार्को इज अ ग्लोबली renowned architect who is now working on energy friendly cities in India. और मार्को का कॉन्सेप्ट है, मार्को हैज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सिटर्जी as to how to build cities which produce their own energy. That's Mr. Marco Karano. May I also call upon Mr. Sandeep Khanna from Control S, who are our main supporters. They have been our supporters for the past 3 years and the support continues. Control S एक ऐसी संस्था है जो मतलब एशिया के सबसे लार्जेस्ट डेटा सर्वर कंपनी है आज, और इनके जितने भी डेटा सर्वर्स है अक्रॉस इंडिया सभी मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, और ये मतलब उनका सबसे बड़ा इनोवेशन रहा है जिसकी वजह से इनको NASSCOM का इनोवेशन अवार्ड भी मिला है। I would also like to call upon my other co-founder Ms. Meenu Chopra to please come up and be on the dais with us. रेक्स जो है हम पिछले 6 सालों से इसे मतलब राइट एवरी रॉन्ग कॉन्क्लेव के टाइटल के अंदर हम इसे मतलब प्रमोट करे आ रहे हैं, और हर 25 और 26 को हम मतलब ऑर्गेनाइज करते थे, क्योंकि 26 तारीख को जो है 26/11 जो है वो हमारे लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण दिन है। 26/11 को आप लोगों को पता है क्या हुआ था? बताइए। टाटा का होटल गिर गया था। कौन से साल में? 2008 में ना, पर हम 10 सालों से मतलब 26/11 को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो 2008 को 10 साल से पहले नहीं था, तो 10 सालों से हम क्यों इसे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं? 26/11 को कुछ और महत्वपूर्ण हुआ था। नहीं, वो तो 2008 में है ना, पर 10 साल से पहले कुछ कई सालों पहले 26/11 को और कुछ हुआ था। इसमें लिखा होगा। यही तो प्रॉब्लम है ना इंडिया का। अगर आपने देखा होगा रेक्स का पूरा वीडियो जो है, इसमें हमने मतलब काफी एम्फसिस दिया है ईस्टर्न फिलोसॉफी के ऊपर। हम इंडिया में जो आज है, इंडिया में ईस्ट में जो है, हम ये समझते हैं कि काफी जो हमारी साइंस है वो बाहर से आई हो, अमेरिका से आई या यूरोप से आई। ये बात गलत है। बात यह है कि ज्यादातर फिलोसॉफी है जो पब्लिक हेल्थ हो वो आयुर्वेदा से आई थी। सत्याग्रह भी ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है, योगा भी ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है, शून्य जो है C0 जो है वो भी ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है। और 26/11 को अब हम इंडियन अगर होके नहीं जानते कि 26/11 को क्या हुआ तो मतलब काफी सोचने की बात है, शर्मिंदगी की बात है ना। 26/11 1949 में कुछ हुआ था। पहले बार कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था पार्लियामेंट में, पर ज्यादातर इंडियन लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब याद करते ही नहीं। और यही हमारी कोशिश रही है पिछले 8 सालों से कि हम 26/11 को जो है वी सेलिब्रेटेड एज द सिटीजन एक्शन डे, और इसी दिन पे हम कर्मवीर अवार्ड्स भी देते हैं। ये अवार्ड्स हम हर एक नागरिक को देते हैं जो कुछ समाज के लिए कर रहा हो, या आपके स्टैचर या आप कौन हो इसके ऊपर नहीं अवार्ड देते हैं। हम ये अवार्ड देते हैं जो लोग मतलब कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, जो समाज में एक बदलाव ला रहे हैं, और एक ग्लोबल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस और सिटीजन एक्शन। और रेक्स जो एक ऐसा फोरम है जिसे हम पिछले 7 साल से मतलब राइट एवरी रॉन्ग कॉन्क्लेव के नाम से हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और इसमें हमारे कर्मवीर अवार्डी जो है आके मतलब चर्चा करते हैं, अपने आइडियाज प्रेजेंट करते हैं, और इन्हीं आइडियाज को हम मतलब फिर प्रमोट करते हैं कि समाज में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, हाउ कैन वी मेक अ डिफरेंस इन सोसाइटी, है ना।
तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्स, आइडियाज फॉर एक्शन। चाहे आइडियाज एनवायरनमेंट के बारे में हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में हो, करप्शन कैसे रोकना हो, तो काफी ऐसे आइडियाज हमारे आए हैं। I would like to show you a website called hallapolo.com which we are promoting. It is a website जिसके थ्रू मतलब हर एक नागरिक को हम मतलब एम्पावर करना चाहते हैं कि आप अपने डे टू डे बेसिस पे करप्शन रोक सको। hallapolo.com वेबसाइट का नाम है और एक ऐसे आइडिया है जिसमें मतलब 3 हम आपको मतलब वेपन्स दे रहे हैं जिससे आप डे टू डे करप्शन कहीं पे भी, चाहे वो पुलिस के साथ हो, चाहे वो स्कूल में हो जो कैपिटेशन फी मांग रहे हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हो जहाँ पे कोई रिश्वत मांग रहे हो। और 3 वेपन जो है, पहली वेपन जो है वो विसल है कि आप अपने जेब में मतलब सीटी लेके घूमो ताकि जब भी कुछ गलत हो तो आप सीटी बचाओ। सीटी बजाना हम इसलिए मतलब महत्वपूर्ण समझते हैं क्योंकि इसका लिटरल मीनिंग है ब्लो द विसल, और इसका दूसरा मतलब स्पेशलिटी है कि जब आप सीटी बजाओ तो लोगों को पता होगा कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो लोग आप ये ऑनलाइन हो रहा है ऑल इंडिया के लिए हो रहा है। हाँ, वो मतलब काफी मतलब जगह फैल गया है, पर इसका जो रूट्स है वो फिर भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में है। तो उड़ीसा में एक यंग फ्रीडम फाइटर था जिन्होंने 500 विसल्स दिए थे उड़ीसा में कि जब भी आप ब्रिटिशर को देखो जो कुछ कर रहा हो मतलब भारतीय के खिलाफ, तो आप सीटी बजा के लोगों को मतलब अलर्ट कर दो। तो पहला वेपन हो गया। दूसरा वेपन आपका मोबाइल फोन है कि मोबाइल फोन तैयार रखो और जो भी मतलब कुछ गलत कर रहा हो उसको आप रिकॉर्ड कर दो। और तीसरा वेपन इंटरनेट है कि मोबाइल फोन से आप उसको अपलोड कर दो तो हल्ला बोलो पे आ जाएगा, और फिर हमारे वॉलंटियर जो है उसी लिंक को लेके मतलब उस ऑफिस को भेजेंगे कि आप लोग कुछ गलत कर रहे हैं, आपके तो पुलिस वाले या आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इसके बारे में कुछ आपको एक्शन करना हो। तो ये पूरा जो है पावर हम दे रहे हैं, हैंड्स ऑफ द पीपल, पावर टू द पीपल। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हल्ला बोलो। एंड हल्ला बोलो इज वन सच आइडिया व्हिच वी विल बी प्रेजेंटिंग एट रेक्स 2012 इन दिस ईयर। So having said that, I would now like to call upon Mr. Sandeep Khanna to speak about controllers and their support to Rex and Karnauli. पिछले 4 साल से हम लोग कर्मवीर पुरस्कार से एसोसिएटेड हैं और मतलब मेरे सामने पिछले 3 साल से मैं शायद हर कॉन्फ्रेंस में कर्मवीर पुरस्कार की आ रहा हूँ, तो मैंने खुद देखा है कि लोगों में कितना चेंज आया है। जो लोग मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, मैं अपने में खुद में एक चेंज महसूस करता हूँ जब से मैं इससे साथ एसोसिएट हुआ हूँ कि अगर आपको चेंज चाहिए तो आपको पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। दैट इज दी लॉजिक। उस लॉजिक के साथ हम बात करते हैं अगर, तो ये बहुत बड़ा बढ़िया इनिशिएटिव है, बिकॉज कई लोग जो है वो शायद ऐसे स्टेज पे नहीं आ पाते हैं कि जो बोलना चाहें गलत को गलत, तो हम नेट के जरिए या इन सब चीजों के जरिए इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो दैट इज द लॉजिक। बाकी कंट्रोलर्स पिछले 3 साल से एसोसिएटेड है। हम खुद भी अपने आप में कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें इन सब चीज़ों को। अपने आप में भी हमने इंडिया के लिए काफ़ी कुछ किया है, जैसे कि हमने एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेटा सेंटर्स बनाए हैं जो कि ग्रीन डेटा सेंटर्स हम बोलते हैं जिनको। उससे भी मतलब जितना हम कर सकते हैं एज अ कॉर्पोरेट, उस तरह से हम हर चीज़ में कंट्री के लिए बेनिफिशियल चीज़ें कर रहे हैं। एंड प्लस ये एजुकेशन हम विद इन दी कंपनी भी दे रहे हैं लोगों को कि आप अगर ये सब चीज़ें करते हैं देन प्रोबेबली वी कैन चेंज दी कंट्री और वी कैन चेंज दी वर्ल्ड। अगर हमें सबको चेंज करना है तो अपने को चेंज पहले करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये इनिशिएटिव भी हमारा काफ़ी सक्सेस होना चाहिए। एंड विद दैट आई से थैंक्स टू जेरी वंस अगेन। तो रेक्स का जो भी मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपके प्रेस रिलीज में दिया गया है आपको, और इसमें पिछले 7 सालों से हमने क्या काम किया, क्या इम्पैक्ट किया है, वो हमारे वेबसाइट पे है, हिस्ट्री और इम्पैक्ट के अंदर। हमने काफ़ी काम किया है करप्शन के ऊपर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वॉलंटियरिज्म प्रमोट करने के ऊपर और कम्युनल हार्मनी के ऊपर। और उनके इसमें हमारे पार्टनर्स रहे हैं यूएन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, काफ़ी मतलब पार्टनर्स हैं
ऐसी एक संस्था VSO भी है जो हमारे पार्टनर्स है। VSO इज वॉलंटरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, UN वॉलंटियर्स है, और SOAP है जो गुल पनाग जी ने स्टार्ट किया है ताकि हम कॉर्पोरेट्स में वॉलंटियरिज्म प्रमोट कर सकें। तो ऑल द डिटेल्स आर ऑन rexideas.com. Please do read through it. Yeah. I would also now like to call on our co-founder Meenu Chopra to speak a few words about Rex and Karmaveer. थैंक यू जेरी। जैसा कि अभी आपको जेरी ने बताया कि रेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आकर अपने आइडियाज़ के बारे में बात कर सकते हैं। ये जो हम पिछले 7-8 साल से हमने कर्मवीर और राइट एवरी रॉन्ग करके जो मूवमेंट शुरू किया है, उससे हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्होंने अपने ही दायरे में रहते हुए समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और उनकी जब हमने स्टोरीज को हाईलाइट किया है अपने अवार्ड सेरेमनी पे और अपने इस नॉलेज फोरम पे, तो काफ़ी लोगों को प्रोत्साहन मिला है इस तरह के कामों को आगे बढ़ाने का। काफ़ी लोगों ने एक दूसरे के साथ हाथ जोड़े हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं काफ़ी लोग उन मूवमेंट्स को आगे ले जाने के लिए। तो हमारा मेन मकसद ये है कि आइडियाज़ तो सभी के पास होते हैं। एक हाउसवाइफ के पास आइडिया हो सकता है बच्चों को बड़ा करके अच्छा नागरिक बनाने का, एक बैंकर के पास आइडिया हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के लोगों को इम्पैक्ट करने का, एक आर्किटेक्ट के पास आइडिया हो सकता है शहरों को ज़्यादा अच्छा इको फ्रेंडली बनाने का, एक स्टूडेंट के पास आइडिया हो सकता है अपने शहर को और ज़्यादा बढ़िया बनाने का। तो ये रेक्स हमने एक ऐसा फोरम बनाया है जहाँ पर लोग आकर अपने आइडियाज़ के बारे में बात कर सकते हैं। ये एक इवेंट हो रहा है, लेकिन उन लोगों की आवाज़ इंटरनेट के जरिए काफ़ी लोगों तक पहुँचाई जाएगी, पूरे विश्व भर में पहुँचाई जाएगी। और हमारा मकसद ये है कि उस आवाज़ को सुन के, उस आइडियाज़ को सुनकर और ज़्यादा लोग प्रोत्साहित हों और एक दूसरे के साथ जुड़कर इन मूवमेंट्स को आगे बढ़ाएं ताकि हम हर दायरे में एक बदलाव ला सकें। और तभी जब सब नागरिक मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे तभी हम बदलाव ला पाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल एरिया में हो, चाहे वो सोशल एरिया में हो, चाहे वो हमारे अपने घरों में ही हो, क्योंकि असली बदलाव तो हमारे खुद के अंदर से शुरू होता है। तो हमने पिछले कई सालों से यही हमारा एक मिशन रहा है कि हम हर एक नागरिक के अंदर कुछ कर दिखाने की भावना को उजागर करें ताकि हर कोई आगे बढ़कर सिटीजन एक्शन के जरिए बदलाव ला सके। और यही हमारा संविधान हमें सिखाता है, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है, और यही रीजन है कि हमने 26 नवंबर चूज किया है कर्मवीर पुरस्कार सेरेमनी के लिए, ताकि लोग अपने अंदर के बदलाव, अपने अंदर के चेंज हीरो को पहचानें, वॉलंटियर करें, आगे बढ़े, लोगों के साथ जुड़े और मिलकर एक बदलाव ला सकें। तो rexideas.com के थ्रू हम लोग यही करना चाहेंगे और इन आइडियाज़ को आगे लाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन आइडियाज़ को पहुंचाकर एक बदलाव लाने की उम्मीद रखते हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब हमारा साथ देंगे इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू। मीनू जी, मतलब हम सब जो काम करते हैं आईकॉन के साथ, हमारा मेन टाइटल जो है जस्ट अनदर वॉलंटियर है, क्योंकि हम सब वॉलंटियर्स हैं। और यही मतलब एक हम भावना लोगों में भी मतलब पैदा करना चाहते हैं कि हम सब कुछ मिलके कुछ कर सकते हैं। हमारा स्लोगन जो है वो है टुगेदर एज वन वी कैन राइट एवरी रॉन्ग। हम ये नहीं समझते हैं कि हम ही मतलब पूरा जो गलत है वो उसको सही कर सकते हैं, पर अगर सब जुड़ जाए तो सबका जो छोटा छोटा एक्शन है वो मतलब एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और यही हमारी कोशिश रही है पिछले 7 सालों से। 5 साल पहले हमने एक वेबसाइट लॉन्च की थी जिसका नाम था idishum.com। idishum.com, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, काफ़ी जो इनोवेशन होता है उसके लिए सब अमेरिका और यूरोप को ही क्रेडिट देते हैं, पर जूलियन असांगे विकीलीक्स से पहले idishum.com लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2007 को, और ये पहला सिटीजन रिपोर्टिंग और विसल ब्लोइंग वेबसाइट था। करीबन 1 साल पहले हमें हैक किया गया था क्योंकि इस पे काफ़ी जो न्यूज़ था वो सिर्फ सिटीजन्स ने रिपोर्ट किया था, चाहे वो वेदांता के अगेंस्ट हो या मॉन्सैंटो के अगेंस्ट हो, कोका-कोला के अगेंस्ट हो। ये हार्ड न्यूज़ था जो काफ़ी अखबारों में आजकल पढ़ना मिलता नहीं है ना। तो ये आइडिशम जो है हमने फिर से लॉन्च किया है 28 सितंबर को, जो भगत सिंह जी का बर्थडे है, और इसमें हम मतलब सिटीजन रिपोर्टिंग को बहुत तगड़े तरह से मतलब हम प्रमोट कर रहे हैं।
और इस पे हमारा यही मतलब प्रॉमिस है कि एक बार न्यूज़ इसके ऊपर जाए, चाहे कुछ भी हो, न्यूज़ नीचे कभी नहीं आएगा। और iedition.com को प्रमोट करने वाला हमारा एक साथी वॉलंटियर है, काफ़ी यंगस्टर है, जो मतलब IT इंडस्ट्री छोड़ के हमें ज्वाइन कर लिया है उन्होंने। उनका नाम है हुनर ब्रार, और मैं हुनर ब्रार को चाहूँगा कि वो आके कुछ iedition के बारे में बात करें। सभी को मेरा नमस्ते। iedition.com एक मीडिया पोर्टल है जो कि हमने iCombo की तरफ से लॉन्च किया है, जिसपे आप अपनी कोई भी न्यूज़ एज अ फ्रीलांसर, एज अ इंडिविजुअल आप पोस्ट कर सकते हो जाके, जिसकी आपको चाहे वो वीडियो की तरह हो। और इसका हमारे पास डेटाबेस है अराउंड, जो कि पिछले 5 साल से हम रिपोर्टर्स आके पोस्ट कर रहे हैं या कंसर्न सिटीजन इसे इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनको साथ ही साथ सबको एक साथ में न्यूज़ चली जाती है। और जैसे कि जैसे ने अभी बताया, कोई भी न्यूज़ पोस्ट होती है इस पर वो नीचे नहीं आती। तो इसका नाम हमने iedition भी इसीलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज iedition इज हार्ड हिटिंग पंच। जैसे हिंदी फिल्मों में डिशम करते हैं हम, और आज अगर आप देखोगे छोटे होते बच्चे, हम छोटे होते थे तब यही सुनते थे, बात करते हैं, खेलते हैं आपस में डिशम डिशम। लेकिन असली मतलब उस डिशम का यही है, अगर आप अपने बच्चों को या आप अपने आप में डिशम करना सीखो बुराई की तरफ, सो यू कैन राइट अ रॉन्ग। आप बुराई के बारे में लिख भी सकते हैं और लोगों को उसके बारे में बता भी सकते हैं। सो दैट्स मोर अबाउट थैंक यू हुनर। तो काफ़ी आइडियाज़ जो है वो इंडिया में मतलब पैदा हो रहे हैं। iedition का आइडिया जो ऑनलाइन आइडिया है, ताकि लोग मतलब एक्टिविस्ट बन सकें अपने आर्मचेयर में बैठ के, अपने कंप्यूटर पर बैठ के। आपको कहीं जाके किसी संस्था को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ अभी आए हैं मिस्टर मार्क पार्किंसन, जो है हेड ऑफ फुलस्कैप फॉरेन एडुवेंचर्स। मिस्टर पार्किंसन प्लीज कम ऑन द इंटरनेशनल एजुकेशनिस्ट है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड हेड ऑफ फुलस्कैप फॉरेन एडुवेंचर्स है। इससे पहले डायरेक्टर रह चुके हैं श्रीराम स्कूल्स के, और हमारे फिर से को फाउंडर और रेक्स के स्पीकर होंगे। तो रेक्स में काफी एक्टिविस्ट बात करेंगे कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं समाज को सुधारने के लिए। काफी एंटरटेनर्स का बात करेंगे कि हम कैसे मूवीज बना रहे हैं एक समाज में बदलाव लाने के लिए। मीडिया के लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपने कलम के साथ मतलब एक समाज में बदलाव ला रहे हैं। फिर इनोवेटर्स, सोशल एंटरप्रेन्योर्स बात करेंगे कि हम अपने मतलब लो कॉस्ट हाउसिंग या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के तरह तो वो क्या बदलाव ला रहे हैं। और कुछ ग्लोबल हस्तियां भी हैं जो बात करेंगे कि अपने वेंचर्स के तहत, अपने मतलब काम के तहत वो क्या बदलाव ला रहे हैं इंडिया में और ग्लोबली। ऐसा ही एक हमारा जो साथी है, उनका नाम है मिस्टर मार्को करानो। ये वैसे इटली के वासी हैं और काफी जगह पे काम कर चुके हैं। न्यूयॉर्क में काफी उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, इंडिया में काफी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और इनका पूरा जो मतलब फोकस है वो यही है कि मतलब हम शहरों को कैसे एनर्जी फ्रेंडली बना सकते हैं। और मिस्टर मार्को करानो जो है ये इसी बारे में बात करेंगे रेक्स 2012 में 25, 26 और 27 नवंबर को जीसस मैरी कॉलेज चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में। तो मैं चाहूंगा कि मार्को करानो अपने सिटर्जीज जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में एक झलक में पेश करें। थैंक यू। Namaste, and sorry if I switch to English. There are three fundamental points that I just would like to mention today. One is that every year we consume 1.5 of the energy that actually we produce on Earth. Number two is that there are 2.5 billion people that need to be dualed. And the number three is that every year 3.5 times there are more suicidal people on Earth than the year before. All three, these numbers, they're partly due to the way we plan our cities. On the base of these numbers and this discussion,
I started my connection with Jerry and Rex. There was no nothing else that just going through these fundamental issues to understand why, as a respected society, why us as a human beings, we have to face each other every year and look at this number as a secondary part of our, in my case, professional life, instead of being the starting point of my designing. And this is what Sytergy is, and this is what Rex liked, and they wanted to know more. And their philosophy of the way that they see the work going on embraces somehow how to solve part of the main point, which are not the only one, but certainly they give you an idea of what kind of commitment we all need to get in order to improve our society. Thank you. थैंक यू मार्को जी। और मार्को जी तो हिंदी में बोल नहीं सकते क्योंकि इटली के हैं हमारी तरह, हम भी गोवा के हैं, हिंदी काफ़ी बोल नहीं सकते हैं पर कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी स्पीच सुनना मार्को जी का 25, 26, 27 को जीसस मैरी कॉलेज में। मार्को जैसे और भी कई ग्लोबल स्पीकर्स आ रहे हैं जिनका नाम है, मैं जैसे माइकल नॉर्टन है, सभी के नाम आपको दिए गए हैं। मैरी कॉम मांगते भी हैं जो हमारे ओलंपियन हैं, और वो भी चर्चा करेगी वहाँ पे कि स्पोर्ट्स को कैसे मतलब हम प्रमोट कर सकते हैं। हमारे बहुत ही अच्छे मित्र और सपोर्टर जो हैं, मिस्टर मार्क पार्किंसन, काफ़ी सालों से मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और मतलब जज्बा यही रखते हैं कि एजुकेशन में कैसे हम रिफॉर्म्स ला सकें जो सभी के लिए मतलब अच्छा एजुकेशन क्रिएट करें। And Mr. Mark Parkinson is going to be speaking about education and how we can use the medium of education to promote and create a better society at REX 2012. So without further ado, I would like Mr. Mark Parkinson, who is the Executive Director of Kunstkaps Golden Schools, to speak about this. Thank you. Namaste. I'm also, I'm afraid, going to be speaking in English, although many friends now do call me an honorary Indian after close on 14 years in the country. When I came, I thought I was maybe coming for a year and a half. 14 years later, I'm still here. Listening to Marco's statistics just now, it would be very easy to become quite depressed about the state of the world and where we're headed. Certainly anyone who reads their newspapers in the morning would get depressed pretty quickly. As an educator, I don't believe I can afford to get depressed. If every day, day in, day out, I present children with a vision of tomorrow that is just bad, 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 and worse than today, then what hope do I give them? What chance do I give them to believe that actually there is scope and hope for a better world down the road? On the evidence, it may well be the case that as a generation we have to say we haven't done anything too clever so far in terms of the kind of world that we're going to be handing on to the children. But that, in some ways, makes it even more important for us as educators that we work with children to understand that it is not possible that they can solve the problems of the world tomorrow applying the same kind of solutions that we have tried to apply up until now. And therefore, young people are going to need levels of creativity, levels of open-mindedness, levels of ability to synergize knowledge from different sources and use it in different ways, levels which we can only begin to dream about. And therefore, within the education system, we have to work to ensure that they're not just getting filled up with lots of stuff, but that they are developing the skills to have those open minds so that they can be part of creating a better future tomorrow. And so that's really, I think, where education and REX come together. And I see REX really as being about hope, because it really does become apparent quite quickly
that when you look around, there are actually so many reasons to hope, and there are so many people doing phenomenal work. And if those people can just be brought together and can share their ideas and synergize their ideas, then the scope for them to take their work even further becomes that much greater. So I have to say, I'm really looking forward to later in the month when the event takes place. I think it's going to be incredibly exciting, and it's a privilege to be part of it at this stage. Thanks. Thank you, Mr. Parkinson. काफी हमने बताया कि आपको रेक्स के बारे में, और आप सभी को मतलब निमंत्रण है कि आप आके हमारे साथ जुड़े हैं इस मूवमेंट में 25, 26 और 27 नवंबर को। और अब हम हमारा रेक्स का जो लोगो है उसका अनवेलिंग करेंगे मीडिया के सामने। ये पहले बार हम मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली में, और ये हम चाहेंगे कि सभी जो गेस्ट हैं डायस पे इसका अनवेलिंग करें मुनर जी के साथ। एनर्जी है मुनर जी। Yeah, income closer. एक मिनट भैया, सेंटर सर। If there are any questions, we are open to questions, or we can bring king in Latin. So we are saying that our entire purpose is to create king-size thought leadership for change, and that's what REX means. And REX stands for three different things. If you see the X also, it's made like the wrong being corrected. So it's right every wrong word. So R stands for right every wrong actions. E stands for empowering and entertaining ideas, चाहे वो street plays हो, चाहे वो movies हो, जो बदलाव ला रहे हैं, TV shows or in the cities. So how do you are going to have a focus on those ideas? Sometimes the ideas of the gender bias, sometimes the ideas of corruption, sometimes even lectures between politician or other, whatever. So the ideas of the evils are being germinated, as he has said the newspaper you read it. So what is your focus idea to nullify all those evil ideas? So I think that the only way to kind of nullify those ideas is, it's a very increase that, and what is wrong will get nullified automatically. So जो काम कर रहे हैं अपने स्पेस में, ताकि वो ideas exchange कर सके. They can exchange ideas, and these ideas will also be available on reasons why citizenship should matter in everybody's lives, and therefore it's appropriate that people come together and talk about citizenship and share examples of what good citizenship can do. Because I think, when I look around me, one of the things that is very clear to me, I think, is that the frustrations and the fears in the public mind about all of the stuff, relating to corruption, about, you mentioned, an unhealthy relationship between, for example, media and business, let's say, in terms of, just by way of one example, a prominent magazine where the editorial 3 weeks ago said, it's inappropriate to worry about the environment in India. We must just let the shackles off and let everything go ahead. Everything can be justified for industrial purposes. And so dig up all the coal, chop down all the forests, it doesn't matter. It's necessary if we want the economic growth we want. Now those are the kind of things that I think make citizens feel very scared. But it's also important that citizens come together and remember that this is a democracy and that citizens have a voice. But I think somewhere citizens need to train themselves to use that voice. And perhaps in some places, over time, citizens have got better at using their voice. And, occasions like this give an opportunity to bring out the citizen voice. All right, I continue. There is a political spectrum which has the political parties in India are not doing, as per the citizens' desire or hopes. So what do you have an idea for that? If you can, enunciate any, I'm just giving an example, that suppose we all as an Indian know that these political parties are not following or doing good activities for the constitution to be, put into the right frame. So what is your idea that you can create and we can follow that? So the Yeah. voting, you just want to intervene. As an Indian. Yeah, it's okay. Well, I hope the question is in Congress here.
Yeah, definitely. Mostly because the subject that I am bringing on the table in this discussion has a huge political impact. As you obviously understand, when you talk about city planning, there is millions of political issues that come into it. Well, what I find interesting for me as a planner is that I am dealing on the issues that are fundamental to make a better proposal from a platform of need, which is the one that we are presenting here at Rex. So there is no anybody that is commanding a direction or saying you go in that direction because that direction will be very profitable for me. This is actually a platform where I am talking and dealing, which on what was on the base of the beginning of my project strategy, on the needs of the people without any political orientation. Now, where it will go, at a certain moment will go somewhere where the political aspect of the making comes in place. Without that, we won't be able to do it. But that's, I think, is something that comes after. Not after, too much after, but after the platform is created. And this is what I am trying to do and using and staying with Rex in order to make sure that the voice comes out clear. No, but in Eastern wisdom, we know if you do this thing, the likely effect is likely to be created in this synergy. So there is nothing, people who have got a wisdom, they understand that these parties or the people which they are doing this, that will take the country to this direction. I am not, trying to emphasize on the wisdom of the people. I am asking you a straightforward question, what the common man should do and how he can, orient the right direction in a synergical way, which you are trying to create. See, the only thing a common man can do is to change himself or herself, right? There are no set of ideas which you can follow. The biggest problem is everyone in this country is looking for a leader. Why can't you be alone a leader? That is the biggest problem. Don't you know that Right. for a leadership, how much money you need, how much fan following you need? Please, sir, we're not talking about that kind of leadership. Just to give a simple I'm example. saying that everyone wants to follow someone. That one. We can. I can understand, I think, where your question is coming from, because of course we recently had this scenario in this country where some people who were standing up to talk about things that were wrong then felt that the only way they could address them was by jumping into the pit alongside all the other people in the pit. Let me just give an example. I think one of the important things is to understand that the people who are going to go on the stage at Rex are not standing there saying, we've got all the ideas and we've got the solutions to every problem in your lives and every problem in terms of creating a good society. But just by way of one example from the education field, quite recently, schools in a number of states across the country went on strike on various issues where they wanted to protest against government. I personally didn't agree with the fact that my peers were closing their schools. I felt that to shut the children out was to make victims of the children, was to also potentially lose the argument for hearts and minds in terms of the fact that you were making the children pawns. But I scratched my head about, well, okay, what could be done instead? Because it is right that the schools have a voice and that they express their voice. And then one day I was reading something online and I came across this beautiful little piece about a week ago. And in fact, it comes from Italy. So teachers in Italian schools in Milan wanted to protest against the government. So what they did was, on a weekend, I think it was either a weekend or a day after the school day had finished, they went into shopping malls and sat in shopping malls marking children's schoolwork. They did a protest marking of schoolwork. Now at the end of the day, this is teachers saying, look, we're so sincere about our work, we're not going to interfere in any way with the good of the children, but here's something we can do to have our voice heard and to put up our voice out there. The reason I give that as an example is because at the end of the day, sharing such examples, having a platform and a forum where people share ideas, empowers everybody
to exercise their citizenship that little bit more. And if everybody gets to exercise their citizenship a little bit more, the net overall effect is a massive reduction in the power of those small number of people who may be pulling too many of the strings right now. That's my perception. One more sentence I would like to add. You know, this problem is not of India. It is of Russia, Ukraine, Syria, Central Africa, and wherever We can all protest against corruption and keep asking for a Mahatma and a Anna. But if we go to the government office and pay a bribe, we are a part of the corruption. And that is where active citizenship comes into place. Can we say no to the bribe and walk out? Can we say no to capitation fee? Can we say no? So those are the ideas, and these are we've been working on this for the past 7 years. सर अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, पैसे भी कमाने हैं। मानता हूँ सर। नहीं देंगे तो क्या काम करेंगे? सर मानता हूँ, पर वहीं पे ये देश आपको मतलब आधारित भी करता है कि आपको कैपिटेशन फी भरने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। उसके बाद बच्चा 12 बजे आता है, मेरा स्वास्थ्य में क्या होगा? सर ऐसा है। तो इससे ना हमने आपके लिए various teams, most of the teams are given in a press release, but over 40 speakers will be. मीडिया के लिए फ्री एंट्री? Yes, we will create. 25,000 रुपए का फीस है। हाँ जी। तो सिस्टम में हमें मतलब जवाब देना है गवर्नमेंट। आपका भी तो सिस्टम है ना, उसमें भी हमको बचना है। कोई बात अगर हम सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे तो कैसे चलेगा? जिस पर गवर्नमेंट पर्पस इसका यही है कि हम मतलब जैसे कि हमने बताया पिछले 6 साल में हमने काफी काम किया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एंटी करप्शन इश्यूज के ऊपर, कम्युनल हार्मनी, इलेक्टोरल रिफॉर्म करने के चर्चा में किया था। और इस साल हमारा जो है जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर कुरैशी है वो भी बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म। मुद्दा एक मेन नहीं है, 40 मुद्दे होंगे। 40 लोग 40 थीम्स के ऊपर बात करेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, आर्किटेक्चर हो, एनर्जी फ्रेंडली सिटीज, अलग अलग मुद्दे पर कॉमन थीम ये कि हम एक बदलाव कैसे ला सकते हैं। How can we make a difference? कॉमन थीम तो ये है कि evils are nexus are more stronger than your goodness nexus. हमारा goodness का कोई nexus नहीं। That is because we've allowed that to happen. But if the good always wins over the evil, never forget that. And I'm not trying to sound biblical. Or from the holy books. The greed is better than the passion. Yes. Thank you so much for all your participation. Thank you very much.